जी, तो अगला है although Ibn al-Mukaf added several tales to the Sasanian recension of bourgeois, analysis of illustration in later manuscripts show that the 5 original tales of Pansa या Panka Chantra were the ones most frequently illustrated. तो यही बताया है कि ये जो खलीला और दमना है ये बहुत दफ़ा इलिस्ट्रेट हो चुकी है. अच्छा, पन मीन्स 5 एंड चंत्रा मीन्स ट्रीटीज. ठीक है. The literally a device of nesting, that is the narrator of a frame story has a character break off to tell a new story is familiar from the 1001 Night. 1001 Night जो स्टोरी है आपने बचपन में भी पढ़ी होगी. दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अलफ लैला. ठीक है. Its frequent employment in the original tales of Kalila or Damna added the variety of choices for the illustrator. This may explain why within these 5 tales there is also a bias. Bias means indication for or against one person or group. ठीक है. In terms of rate of illustration towards those frame stories that comprise a great number of subsidiary stories. Subsidiary means the less important. ठीक है, जो इतनी important नहीं है, but related or supplementary to something, लेकिन किसी और से उसका relation है. The earliest illustrated Arabic manuscripts that have survived dated from the beginning of the 13th century. ठीक है, आपने याद रखना है कि कहाँ से start हुई earliest illustration 13th century से. While the earliest illustrated Persian example मिली है वो मिली है इस्तांबुल Topkapi Sari Library. This is the name of the place जो कि टर्की में है. and is from the last quarter of that century. The Arabic version is second only to the Maqamat by Hariri. Maqamat Hariri is another illustration. ठीक है, in terms of surviving medieval illustrated texts. In the middle of the 14th century, an atelier, probably in Damascus, seemed to have been responsible for a group of 6 closely related Arabic manuscripts, 5 of which were illustrated. Atelier means a studio or a workshop. जहाँ पे वो लोग अपना काम करते थे बैठ के, उसे एटलायर या वर्कशॉप या स्टूडियो कहते हैं. जैसे आजकल आर्टिस्ट अपने उसमें काम करते हैं बैठ के अपने स्टूडियो में, तो उनका जो स्टूडियो था वो एटलायर कहलाता था. अब क्या होता था कि वो जो स्टूडियो होता था उसमें एक बैठा होता था लिखने वाला, लाइक कैलीग्राफर, वो लिखता था. बाकी लोग जो बैठे होते थे वो बैठे होते थे कुछ मार्जिन्स पे जो ड्राइंग्स हुई होती हैं उनके लिए, कुछ अंदर के इलस्ट्रेशंस बनाने के लिए. एक बैठा होता था बुक बाइंडिंग के लिए. तो इनका एक पूरा हाउस होता था या स्टूडियो होता था जिसमें ये काम हो रहा होता था. ठीक है, इस तरह से ग्रुप पे काम होता था तो फिर एक इलस्ट्रेशन या एक बुक बनती थी. मेरे ख्याल से वीडियो लंबा हो जाएगा. हम आगे से जो स्टार्ट करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में होगी. ऐसे अपलोड होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा.